Assalamu alaikum dear students, I am engineer Abdul Basid and continuing the lectures of the steel structures for sixth semester. Here is the topic for today, that is design of compression members. Already we have discussed the phenomena of tension members, how to design compression members, tension members. टेंशन मेंबर्स में हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं जिसमें स्ट्रेस रिवर्सल का कंडीशन हो और उसमें कंप्रेशन मेंबर्स का हिस्सा आ जाता है। ठीक है, तो फिर हम स्ट्रेस रिवर्सल कंडीशन में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम टेंशन मेंबर्स भी डिज़ाइन करते हैं और साथ में उसको कंप्रेशन के लिए भी डिज़ाइन कर लेते हैं। बट सम टाइम जैसे कि हमारे पास कॉलम्स हैं या और कुछ कंप्रेशन मेंबर्स है जो कि पेवरली कंप्रेशन मेंबर्स होते हैं, उनको डिज़ाइन कैसे करते हैं तो उसके लिए भी पूरा हमारे पास जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आज इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, कि हाउ टू डू द प्रोसेस एग्जैक्टली। ठीक है, in previous tutorial we have derived an equation for that is called Euler critical buckling stress equation. Okay, that is already being derived, so here this is the equation. Okay, इसको हमने डिटेल में इसकी डेरिवेशन पढ़ ली है। नाउ इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम अभी इस पे मज़ीद डिस्कशन कर रहे हैं। सो लेट्स मूव forward to this graph. Okay, here you can see कि जब हमारे पास if we draw a graph between the slenderness ratio and the yield stress, okay, or maximum compressive strength of the member. ठीक है, इन दोनों के दरमियान अगर हम ग्राफ ड्रा करें, so this will be the situation. Initially it will be a straight graph, okay, that is horizontal and parallel to this abscissa. Okay, and after that limit is achieved, there will be an inelastic buckling graph, and that is a parabolic graph halfly like a curve graph. ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक पोर्शन आ जाता है जिसमें हमारे पास एक कर्व सा आ जाता है बट इट इज़ कंपेरेटिवली फ्लैटर। ओके, तो ये सिचुएशन कैसे होती है? इनिशियली जब हमारे पास हम स्लेंडरनेस रेशो को 20 से 30 इससे नीचे रखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो बिहेवियर ऑफ द कॉलम होगा दिस विल बी ऑफ अ शॉर्ट कॉलम। ओके, एंड शॉर्ट कॉलम बिहेवियर का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो बकलिंग होगी बिल्कुल सिफर होगी, एंड द टोटल फेलेवर और द टोटल लोड बीइंग टेकन बाय द कंप्रेशन एंड जो हमारे पास वो है क्रशिंग है, उस पे हमारे पास सारा लोड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास मज़ीद हम स्लेंडरनेस रेशो को इंक्रीज़ करेंगे तो अ पॉइंट विल बी रीच्ड अप टिल विच द बकलिंग विल बी इन इलास्टिक बकलिंग। सो मतलब क्या हुआ कि अगर जिस लोड की वजह से आपका बकलिंग आया है और वो लोड आप रिमूव कर लेते हो, सो दिस बकलिंग इज़ इरिवर्सिबल, ये अपनी पोजीशन पे, ये मेंबर अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो परमानेंट इसमें बकलिंग आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मज़ीद आप आर सी से आगे अपने स्लेंडरनेस रेशो को इंक्रीज़ करते हो, सो आपका अप टू 200 या मैक्सिमम और भी हमारे पास 300 तक भी हम जा सकते हैं। तो सारी की सारी बकलिंग जो होगी दिस विल बी इलास्टिक। Okay, so whenever you remove the load that causes this buckling, ठीक है, so the member will be back to its original position। ठीक है, और ये जो हमारे पास बकलिंग होगी दिस विल बी इलास्टिक। नाउ हियर दिस इज द ट्रांजिशन पॉइंट आर सी। ठीक है, आर सी हमारे पास क्या है? दिस इज क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशो। ठीक है, बिलो दिस स्लेंडरनेस रेशो ऑल द मेंबर्स आर कंसिडर एज शॉर्ट कॉलम्स आर इंटरमीडिएट कॉलम्स। लेकिन आर सी से जब हमारे पास स्लेंडरनेस रेशो इंक्रीज हो जाती है, सो देन इट इज कंसिडर्ड एज लॉन्ग कॉलम, और 200 से ज़्यादा हमारे पास स्लेंडरनेस रेशो होगी, सो दिस इज नाउ देन अनएक्सेप्टेबल फॉर दैट कंप्रेशन मेंबर्स। ठीक है, सो here coming back to that same phenomena, ठीक है, this is RC, ठीक है, which is equal to 4.71 under the root E divided by Fy. So for different types of steel it will give us different values। ठीक है, for A36 steel
the this E is already defined, that is 200 megapascal, and Fy is already defined, that is 250 megapascal. ठीक है, so इसको यहाँ पे put कर लो, you will get 133 for A36 steel. So whenever you are designing a member, most probably you will use A36 steel, because in Pakistan only A36 is abundantly available. Okay, so then you have to straight away use this 133 ratio. Okay, because this is for A36 steel. But in case you are given with the type of steel that is not A36 other than A36, then you have to look for its E value and Fy value and then put it over here and determine RC, whichever that value is, उसके मुताबिक फिर आप मज़ीद डिज़ाइन करोगे. ठीक है जी. So coming to that long column, so already I've told you long column refers to that column which is having slenderness ratio greater than critical slenderness ratio RC 133 for A36 steel. ठीक है. दूसरी मैंने यहाँ पे बात की that the buckling occurs in this long column will be elastic buckling. Whenever the load is being taken away, so what will happen, the member that is already bent or buckled will be back to its original position. Okay, so मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे पास यहाँ पे stress strain curve बनता है in the long columns, that is totally in the proportional limit. Here it is in the proportional limit. ठीक है, उसके बाद हमारे पास, so the Euler formula is used to find out the strength of the column where the elastic buckling is control failover mechanism. ठीक है, सो ये हमारे पास एक किस्म का इलास्टिक फेलेवर है, बकलिंग होती है, और दूसरा कंट्रोल मैकेनिज्म होती है. थोड़ा हमें पता चलता है कि हमने कितना लोड अप्लाई किया है और कितना हमें कम करना चाहिए. एंड देन वी हैव these long columns are defined as those columns for which the slenderness ratio is greater than RC, already I've told you. ठीक है, and this is phi, this is the factor that should be included to determine the particular value of the compressive strength. Now short columns refers to those columns which is having slenderness ratio less than 2 or 30, 20 to 30. Okay, and जो हमारे पास buckling होगी यहाँ पे, so chances सिफर है, there is no buckling. ठीक है, buckling chances in the short columns. ठीक है, only yield stress हमारे पास आएगी. ठीक है जी. In practice very few columns meet this condition. Normally हमारे पास बहुत कम ही columns ऐसे हो सकते हैं जो short होंगे. Normally intermediate होंगे या long columns होंगे. ठीक है, so this is that value for intermediate जिसका 30 से ऊपर 133 तक slenderness ratio होगा, so वो intermediate होंगे. And again long column तो मैं बता चुका हूँ. ठीक है, सो इंटरमीडिएट में जो हमारे पास बकलिंग होगी, दिस विल बी इनइलास्टिक बकलिंग. सो हियर इट इज एक्सप्लेन इन डिटेल. ओके, दिस विल बी इनइलास्टिक बकलिंग. स्लैंडरनेस रेशो क्या होगा मैं बता चुका हूँ. एंड दिस बकलिंग कैन बी कंट्रोल्ड एज वेल. ठीक है, ये हमारे पास एक कंट्रोल बकलिंग होगी, इसको हम कम ज़्यादा कर भी सकते हैं. ठीक है, अच्छा. नाउ कमिंग टू द कॉलम स्ट्रेंथ फार्मूला. सो already we have discussed the compressive the tensile strength. ठीक है, उसमें क्या था, phi t tn was the design strength. Okay, tn was actually equal to that fy into ag. Okay, and similarly here is the same formula, बस just हमारे पास ये जो variables हैं वो थोड़े change हो गए. Here instead of tn we have used pn. This is for compressive load. ठीक है, so compressive nominal strength, and phi c is their strength reduction factor for LRFD design method. Okay, and for ASD design method, so this phi c will be replaced with another factor of safety, that is ohm. ठीक है, ohm c, तो इससे और pn हमारे पास will remain the same. Now for compression members whose element do not exhibit elastic local instability, ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ कंपैक्ट मेंबर्स के लिए ये सारी सिचुएशन होगी, तो phi c की वैल्यू 0.9 होगी. दिस इज लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉलम स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन. ओके, सिमिलरली ये जो phi c इसकी वैल्यू तो मैंने बता दी है 0.90 फॉर LRFD डिज़ाइन मेथड. ठीक है, एंड सिमिलरली pn की वैल्यू हमारे पास LRFD के मुताबिक क्या है, FCRAG. ठीक है, दिस इज F critical
और AG हमारे पास ग्रॉस एरिया है, ठीक है। तो इफ़ क्रिटिकल तो मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ, दिस इज़ इफ़ क्रिटिकल, ठीक है। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर, दिस इज़ इफ़ ई एक्चुअली, ठीक है। इफ़ क्रिटिकल इसे कैसे फाइंड करेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगा, बस इसी इक्वेशन से हमारे पास थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म आ जाता है। Here it is, ohm is equal to 1.67, so it's definite according to ASD, okay, and Pn is equal to FCR so Pn remains the same in both the cases of LRFD and ASD, ठीक है। If critical is the critical or ultimate compressive strength based on the limit state of flexure buckling determined as under, ठीक है। अच्छा, अब जब हम if critical find out करेंगे ना, तो उसके लिए हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया है कि एफ ई से ही मैं आपको एफ क्रिटिकल फाइंड आउट करके बताऊंगा कि कैसे हम इससे एफ क्रिटिकल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज यूलर बकलिंग स्ट्रेस, ठीक है, इलास्टिक यूलर बकलिंग स्ट्रेस एफ ई, जो कि हमने इस फार्मूले के तहत फाइंड आउट कर दिया है, एंड डिराइवेशन फॉर दिस इज प्रेजेंट इन द प्रीवियस ट्यूटोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाओ, how to determine this F critical. So sometime it will be equal to 0.877 Fe for elastic buckling, okay, and for inelastic buckling, or and if there is no buckling, okay, so then we will use F critical is equal to 0.658 to the power Fy divided by Fe multiplied by Fy, okay. So all the values are given with you. So how to find out whether this buckling is elastic or inelastic? So here we have two conditions, okay. Either this condition will be acceptable for this calculation, or either this condition will be satisfied. Similarly, either this condition will be satisfied or this condition will be satisfied, then this equation will be acceptable to you. So here it is. What does this condition mean? KL divided by R, this is slenderness ratio, and this is greater than RC, okay. So definitely we are in the long columns range, okay. So here is that range, this range after this RC toward this point, okay. So whenever this is that position, this is that area where the point of your columns lies, so then it will be elastic buckling, and before this point this will be inelastic buckling, okay. So here it is for elastic buckling, and Fe is less than 0.44 Fy. So again 0.44 Fy, this is that I think again we have to move onward, no, the same way, okay. 0.44 Fy, this is like not equal to 1 Fy, okay, less than 0.4 Fy. So this will be their situation where you will use F critical is equal to this thing. And similarly, when slenderness ratio is less than or equal to RC or 133 for A36 steel, and Fe is greater than this thing, okay, so then you have to use this formula, okay. All the terms given in this formula are clear and clear cluster to you people, as we have discussed in previous tutorial. Now coming to types of columns, okay, sections for local stability. So already we have discussed in previous tutorial local stability phenomena and overall instability phenomena. So let me repeat it for you. जब हमारे पास एक कॉलम होता है, ठीक है, एंड दैट इज़ ऑफ डब्ल्यू सेक्शन, ठीक है, तो इसमें फ्लेंज होता है और वेब भी होता है, ठीक है। सो दिस वेब पोर्शन इज़ एक्चुअली अ स्टेबल पोर्शन, ठीक है, जिसमें बकलिंग इंडिविजुअली नहीं आ सकती, बट फ्लेंज पोर्शन इज़ नॉट दैट स्टिफ पोर्शन, एंड दिस इज़ लाइक इंडिविजुअली इसमें बकलिंग आ सकती है, ठीक है। सो दिस फ्लेंज इज़ एक्चुअली कॉल्ड लोकली अनस्टेबल पार्ट ऑफ द मेंबर। जब हमारे पास बकलिंग सिर्फ फ्लेंज में या सिर्फ वेब में आ जाती है, दिस इज़ लोकल इंस्टेबिलिटी। जब हमारे पास दोनों में, वेब में और फ्लेंज में, दोनों में हमारे पास एक साथ बकलिंग आ जाती है, पूरे मेंबर में, पूरे क्रॉस सेक्शन में एक साथ बकलिंग आ जाती है, देन इट इज़ कॉल्ड ओवरऑल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। सो सिमिलरली the compaction and non-compaction or compacted non-compacted section,
both are of the same phenomena जिस तरह मैंने अभी आपको बता दिया है. How? Let me discuss it. यहाँ पे हमारे पास compact section. देखिए जी, जब आपके मेंबर में जो बकलिंग है या जो भी हमारे पास इसमें डिफॉर्मेशन आती है, इफ दिस इज प्लास्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सेक्शन एट वन टाइम, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कंपैक्ट सेक्शन. Whenever this buckling is plastically distributed partly on the member, on some parts of the member, like only on the flange, only on the web, half of the flange. So if this is a source of situation occurs, so then it will be considered as non-compact section. But mathematically, how to differentiate a compact and non-compact section, and similarly this one, the slender compression member, okay, this is the table we can use it for. So here are the rules. Let me go through it. Number one, for compression members to be classified as compact, its flange must be continuously connected to its web, okay, or web and the width thickness ratio of its compression element may not be greater than the limiting ratio lambda p. Okay, so the values for lambda p are given in the table. Okay, width to thickness ratio, so this refers to this value, b divided by t. Okay, so b divided by t is the width to thickness ratio, and lambda p is the value, the values for lambda p are given in the table 3.1 and b 4.1. Okay, so and for the non-compact section the situation will be a bit different, where the non-compact section are defined as those section which have width thickness ratio greater than lambda p but not greater than lambda r, mean it is between lambda p and lambda r. Okay, width to thickness ratio already explained, and value of limiting bt ratio, that is lambda r, okay, are given in the table, and kc is also given over here. So first of all, let me talk about the lambda p. Lambda p is actually equal to 1.12 under the root e divided by fy. So straight away you have to determine the lambda p value from this equation for the types of steels you are given with. Okay, so for A36 steel this is 31.8. Straight away you have to keep it in mind. Okay, and similarly lambda r, for different types of situation lambda r is given here in the table, and b divided by t is given over here. So for compact section the b divided by t should be uh, less than that lambda p. Okay, and for non-compact section it is between lambda p and lambda r, and for that slender compression section it is greater than lambda r. Okay, so the values for lambda r is given over here. Here the value of kc is also required for this section, flange or built up I section with projecting plates or angles. So this is 0.64 under the root kcefy. So e and fy is already you are aware of it, how to determine the a value of e and fy and from where to get it. Kc value is actually given over here in this equation. I hope this is visible to you. Kc is equal to 4 under the root h divided by tw between 0.35 and 0.76. So here is the table again, 3.2. Now slenderness ratio, already slenderness compression section I've already talked about it. Okay, now width of the unstiffed element. So for that b divided by t ratio we need to determine the width of the unstiffed element. So if we are talking about unstiffed elements, फिर हमारे पास ये जो बी एफ डिवाइड या जो हमारे पास b की वैल्यूज़ होती है, this will vary accordingly. Okay, because unstiffed members can be like different in different situation. For example, we have an I-shaped member or a T-shape जिसमें हमारे पास ऊपर flange है तो half of the flange is free. Okay, and on the other side again half of the flange is free. So this b will be equal to bf divided by 2, because half of the flange is stiff, not the whole flange. Unlike, for example, we have a channel section, so all the flange width is free. Okay, there is no connection in the in between that of flanges. Okay, so that's why it is
and the whole length of the or width of the flange is free, and this is unstepped, so then the width will be equal to p. Okay, for legs of angles, then b will be again equal to that longer leg. Okay, and for flanges of the channel and z's, the width will be equal to bf, same as I've told you, channels and z's. For plates, the width will be equal to the distance from the edge to the first row of the fasteners. Okay, and for the stem of the t, that will be equal to that b will be equal to d. Okay, so for nominal depth. Now talking about the width of the stiffed members. Stiffed members, a stiff part of the a stiffed element of the member, so it refers to that web in the I shape or in W section, where h is clear distance between the flanges less the fillet or the corner radius. Okay, so then hc will be equal to simply the depth of the web. Okay, and for web of the weld up shapes, h is the clear distance between the inner lines of the fasteners. Okay, and HC is the twice distance from the centroidal axis to the nearest lines of fastener. Compression members are the inside face of the compression member when welds are used. Okay, and in other cases, for HP will be equal to that distance between the plastic neutral axis. So this is quite simple to do it. Okay, now inshallah in next tutorial we will talk about that modified slenderness ratio. What does it mean by snug tight connection and that turn of nut connection, and then we will talk about that the determination of the modified slenderness ratio. Okay, thank you very much for watching.